Hello everyone. Welcome to lecture 9 of this. So 9. So far in the course we have discussed so many things. So like we talked about search algorithms, we talked about agents, we talked about informed search and uninformed search like A star and use greedy BFS and in uninformed BFS, DFS and other things. So जो भी such problems we have discussed so far, so that key what was our goal? We had this starting state, and we wanted to reach to a goal state somehow. And in this problem, our task was to find this path, right? कि starting state से goal state जाने का जो path है, this path we needed to find, and we were trying to optimize on this path. कि we wanted to find the best available path. Since like there are two paths, P1 and P2, we categorize key which path was better based on the cost key. If P1's cost is less than P2, then we would prefer P1. And if P2's cost is less than P1, then we would prefer P2 over P1. So we were discussing about the algorithms which could actually get this notion and embed this notion of the which is the better path and then choose that path itself, right? Or give that path as a solution. So far, all the problems that we were discussing was related to key starting state is given and goal state is given, and we want to find a path from the initial state to goal state. So what was path? A sequence of action, right? A sequence of actions that you have taken from the starting state to reach the goal state. Okay, but this this is good. We have discussed so many algorithms for this, like uh, A star, UCS, right, which were the optimal algorithms. One was informed and another was uninformed. But there exists some set of problems where we don't really care about the path, but rather the solution itself. So, for example, if you talk about the it's like some simple example, if you talk about it, our eight eight queens puzzles, eight queens problem. Right? So, what is eight queens problem? Eight queens problem is simply you are given this eight cross eight chessboard. Right? This eight cross eight chessboard is given, and we wanted to place eight queens such that no queens attack each other. For example, if I place eight queen one, these eight queens, so you will realize that there are multiple queens that are attacking each other. For example, this one, these are attacking each other, these are attacking each other, right? These ones are attacking each other. And so our goal in this problem is to place all these queens such that okay, no two queens should attack each other. So in this case, like if we start with this, like we said that this is the starting state. Do we really care about the how queens should be moved in one action and like what's the path from starting state to goal state? This goal state. So for this problem, we are more interested in the goal itself, not the actual path. Yes.
This path is not that much of interest for us because what's our goal? Because in this seat, the traveling part, when we were going from city A to city B, we wanted to take a path which was lower cost and all. But if here we are more interested in the goal state, okay, let's place this and that's all we needed. So, given this start, in these kind of problems, we'll have another type of search mechanisms called local search algorithms, which can help us find the goal state much better in a much less time. And another issue with all the search algorithms that we have discussed so far, like the classical, those are known as the classical search algorithms, जो जो हमने पढ़े हैं अभी तक BFS, DFS, UCS, A star and all. So what was the issue with these search algorithms was that they needed a finite state space graph, right? तो किसी भी एल्गोरिथम को वर्क करने के लिए they can only work on this finite state space graph because remember we discussed about the time and space complexity. तो जैसे BFS का space complexity was b to the power d. This much of space BFS was taking. And similarly, तो अगर आपका state space graph is too large, then BFS will take too much amount of space. So we won't even able to store uh, maintain our frontier in a computer, right? And won't be able to store those explode nodes into the computer, and we won't be able to run our BFSL. And that goes for the A star and UCS also. All these algorithms जो अभी तक हमने पढ़ी है, they have the large memory criteria or large memory space criteria, right? So they all need large memory to run, right? तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर मुझे ये एल्गोरिथम्स रन करनी है, तो आई दैट्स जिस भी कंप्यूटर पे हम रन कर रहे हैं, दैट कंप्यूटर शुड हैव द लार्ज enough memory to run these programs. And when we are talking about this memory, we are always talking about the RAM. So computer should have RAM, enough RAM to run these. So, and we talked about that key in BFS case, key this is even taking for B equal to 10. This doesn't help much because in just a few levels of the state space graph, this becomes at 1 TB of the memory or more than 1 TB of the memory it is required, which is not available in the local system. So how we so using these we won't be able to solve any problem which has the sufficient a simple or a large state space graph on our computer because they will take too much of a space or to run that algorithm on the computer. So to avoid or to solve these kind of issues where large memory when we have the state space which is infinite or too large to fit onto the our system, we have these local search algorithms which works on a rather different manner. So how does local search algorithms work? So local search algorithms only so they don't maintain any kind of frontier or anything. So we are not maintaining any frontier. So frontier we are not maintaining any we are not maintaining any explored set or visited set. This is also not maintained by the local search algorithm. So what how local search algorithms work? So if I simply give you a generic algorithm,
First we'll start with the initial configuration, initial config, initial state. ठीक है, तो let's call it x0 कि this is my initial state x0. तो local search algorithms कैसे वर्क करते हैं? If I have to give you a general idea, they will maintain only one state. Let's call that one state x. So this one state is called current state. Now what will they do? Local search algorithms will generate all the successors of this current state. जो भी successors इसके आए हैं, for example x1, x2 and x3. Let's suppose कि तीन successors थे इस state x के. तो तीनों successor generate करने के बाद it will simply select one successor out of these and make it as a current state, and now this will become your current state. And it will simply forget. तो अगर जैसे जैसे करंट स्टेट एक वेरिएबल था, उसमें पहले था x, नाउ करंट स्टेट इज वेरिएबल जिसमें स्टोर्ड है x1. That's it. So now algorithm doesn't have any memory of this previous states. इसकी भी कोई मेमोरी स्टोर नहीं है, इसकी भी कोई मेमोरी स्टोर नहीं है, इसकी भी कोई मेमोरी स्टोर नहीं है. तो algorithm doesn't even know about anything else. Now अब आगे क्या होगा? Algorithm will again work with such a manner. It will again generate the successors. तो let's suppose कि x1 के अगर two successors, three successors थे, x11, x12. Let's work with two successors only. तो अब क्या होगा? इन दोनों में से again it will select one. For example, इसने ये selection किया and that will become your current state. So CS will be now x12, and now algorithm will forget about everything else. So now algorithm will continue with this, and this will go on until we reach the goal state. Until we reach at a goal state, or no improvements are, ठीक है, और no improvement state. What do you mean by that? कि जैसे अब you realize कि यहाँ पे तीन ऑप्शंस थे एल्गोरिथम के पास, राइट? x1, x2, x3. और यहाँ पे भी जैसे दो ऑप्शंस थे, तो इनमें से एक को चूज करना था. तो किसको चूज किया जाए इन तीनों में से? विच वन टू सेलेक्ट? तो किसको चूज किया जाए उसके बेसिस पे वी हैव डिफरेंट लोकल सर्च एल्गोरिथम्स, एंड विल टॉक अबाउट दोज in this lecture. So we'll start with one hill called simple hill climbing algorithm, and then we'll talk about others in the next lecture. Okay, so you got the general idea of how the algorithm works. So we'll start with the initial state x0. So we'll set this to the current state. So initially this will be your current state. Current state like I, so current state equal to x0. Now what? Simply repeat until तो कब तक रिपीट करते रहना? जब तक either we don't know कि गोल स्टेट मिल गया या नहीं मिल गया, या फिर we have something other criteria which, तो repeat until some criteria. तो let's suppose कि some criteria satisfied.
और यू कैन से कि रिपीट until the algorithm has reached your convergence. तो repeat algorithm has converged to some stage कि यहाँ से आगे कुछ अब आगे improvements नहीं हो रहा है तो will return that convergence as a solution. तो इस repetition step में क्या होगा, will simply what will do, will simply generate all the successors, generate all successors of current state. So if we are representing current state तो इसके सारे successors जनरेट हो गए. Evaluate all the successors and select one out of them. ओके तो जो ये स्टेप था कि जो भी सक्सेसर्स जनरेट हुए उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे सेलेक्ट करना, तो विल इवेलुएट दैट ऑल द सक्सेसर्स बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया एंड जो भी उनमें से बेटर है या फिर वर्स है, एनीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू, विल सेलेक्ट वन out of those and we'll move on with it. And so third step, make selected successor the current state, and that's it, right? So that's all we are needed to do. Now what will happen? Now again we'll do go on to this. We'll again generate the successors, again evaluate them, and choose one out of them and make that as a current successor. We'll keep repeating this until we found the convergence or we found the our solution. So how do we evaluate these successors? So this evaluation of the एक state है. For example, if there is this state x and इसके तीन successors है x1, x2, x3. How do I choose कि should I select which successor to select out of these three? So how can I do this? How to evaluate these nodes? So for evaluation of a node, we'll define something called a objective function. So this objective function, what it does, it takes a state as an input, okay, and gives a numerical value and gives a numerical value as output. So this is what this objective function does. So this objective function is just like our heuristic function. Remember heuristic function के बारे में हमने पढ़ा था when we were discussing about the informed search algorithm. So what was heuristic function? It also used to give us a state, given a state, it used to give us a कि वो goal से कितना दूर है, right? That was the heuristic. And so this is just like that only. तो इसको और भी नेम से बोला जा सकता है, this or also known as a heuristic function also itself. So what this objective function does, it takes a state as an input and gives a numerical value as output. So we can represent this as a h. So for example, this will compute h of x, will compute h of x1, x2 and h of x3. And इनमें से जो भी हमारे क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल कर रहा है, we'll select one out of these. We'll select one out of these successors.
So this is how our local search algorithms work. Okay. So now that we know about the general search algorithms, let's take an example of a particular local search method and discuss all these concepts regarding them. So let's take an example of a local search algorithm called hill climbing. Okay. So what does hill climbing do? Hill climbing is just uh, hill climbing is a example of local search algorithm. So how does this work? तो जो भी सक्सेसर हमने जनरेट किया है, फॉर एग्जांपल इसके जो भी सक्सेसर्स हमने जनरेट किए x1 x2 x3, तो what it will do, it will compute the h of x for all these, and it will select successor with highest h of s value. This happens when we are trying to maximize the heuristic function. अगर हम ऐसी प्रॉब्लम पे बात करें, हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है कि गोल स्टेट के लिए जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू गोल स्टेट के लिए, राइट? तो गोल स्टेट को अगर मैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन में दूं तो दिस विल रिटर्न मैक्स वैल्यू, एंड दिस एंड सेलेक्ट, बट इसका अपोजिट भी हो सकता है. वी कैन डिफाइन ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन सच अ मैनर कि वो गोल स्टेट के लिए मिनिमम वैल्यू दे, जैसे जीरो वगैरह. तो सेलेक्ट सक्सेसर, तो उस केस में क्या होगा, वी नीड टू डू अपोजिट with lowest h of s value when we are trying to minimize the heuristic value, minimize objective function, right? तो इस केस में क्या होगा, goal will have the minimum value, and that's it. तो होगा क्या, will start with the current state or initial state x0, right? Will compute the h of x0, so this is my initial state. We'll start with that. We'll generate all the successors. तो let's suppose इसके जो भी successors हमने generate किए, those are x1 and x2. We'll compute those values. So h of x1, h of x1, h of x2. तो we'll compare कि इनमें से बेटर कौन सा, राइट? क्योंकि let's suppose कि minimize the we are trying to minimize our objective function. I goal state has minimum h of n, hn वैल्यू, ठीक है? तो अगर गोल स्टेट की वैल्यू सबसे कम है तो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद दिस, विल कंप्यूट की h of x क्या है, विल गो और विल चेक की x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है. एंड अब यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं, राइट? केस 1, h of x1 is less than h of x0,
and h of x1 is less than h of x2 is less than h of x0. That means कि जो भी सक्सेसर्स बने उन दोनों की ऑब्जेक्टिव वैल्यूज करंट स्टेट जो है उससे छोटी है. अगर दोनों की ऑब्जेक्टिव वैल्यू करंट स्टेट से छोटी है दैट मीन्स कि वी आर ऑन अ गुड पाथ कि वी विल गेट अ बेटर स्टेट, विल रीच द more close towards the goal. So we'll select which one, h of x1 if h of x1 is less than h of x2, less than equal, or h of x2 if h of x2 is less than h of x1. right? तो क्या हो रहा है कि हमेशा हर स्टेट पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास उसको हम चूज कर रहे हैं. right? तो यहाँ पे पहले हमने चूज किया, चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा यही है जो करंट स्टेट है वो ही बेस्ट है, इसके जो भी सक्सेसर जनरेट हो रहा है वो इससे बुरे ही है. अगर ऐसा होगा तो देन देयर इज एन इशू. राइट? तो दोनों अगर छोटे हैं तो विल गो ओवर दिस केस टू. अगर दोनों, इस केस में क्या होता है कि x1 और x2 के लिए वैल्यू अगर x0 से छोटी है तो विल जस्ट पिक वन जिसके जो ज्यादा छोटी है. तो अगर x1 ज्यादा छोटा है तो विल पिक x1. right? So what we'll do in this case, current state will become x1 and यहाँ पे इस केस में क्या होगा, current state will become x2. case 2 कि let's suppose कि h of x1 is greater than equal to h of x0 and h of x2 is less than h of x0. तो इस केस में तो क्या है, सिंपल है. x1 को तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि x1 तो करंट स्टेट से भी बुरा है. राइट? तो बुरे है तो वैल्यू विल गो देयर. तो व्हाट विल डू, सिंपली करंट only we have only one choice x2. तो current state equal to x2. case 3 h of x2 is greater than equal to h of x0 and h of x1 is less than h of x0. इस केस में क्या होगा, current state equal to h of x1. right? Because now x1 is better than this. But in the case 4 there is another case 4 कि what if both are greater, x1 is greater than h of x0 and h of x2 is greater than equal to h of x0. इस केस में क्या होगा, सिंस दोनों जो सक्सेसर्स है इसके दोनों करंट स्टेट से बुरे या इक्विवेलेंट है तो उन पे जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है. तो इन दैट केस व्हाट विल डू, विल रिटर्न x0 as solution. कि यही हमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वही मिला, इससे ज्यादा हमें एल्गोरिथम आगे सर्च भी नहीं करेगा. राइट? तो दिस इज हाउ द हिल क्लाइंबिंग वर्क्स. तो यहाँ पे जैसे x0 के लिए हमने ये केसेस लिखे, आप सिमिलरली x1 के लिए लिख सकते हो. जैसे अगर इन केसेस में जो भी आगे बढ़ा उस पे एल्गोरिथम विल कंटिन्यू फर्दर, इसमें इसके लिए आगे होगा, इसमें इसके लिए होगा, और यहाँ पे एल्गोरिथम टर्मिनेट्स. तो देयर विल कम अ सिचुएशन लाइक दिस जब एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगी. So this is how your hill climbing works. कि it will start with an initial state and then generate all the successors. जो भी successors generate किए will evaluate those
बेस्ड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव वैल्यू, एंड उन ऑब्जेक्टिव वैल्यूज के बेसिस पे जो भी सक्सेसर्स के लिए बेटर ऑब्जेक्टिव वैल्यू आ रही है, विल सेलेक्ट वन आउट ऑफ दिस, और राइट, तो वन कौन सा वाला जिसके लिए सबसे बेस्ट है, विल सेलेक्ट द बेस्ट ऑब्जेक्टिव वैल्यू विच इज देयर, एंड that's how we are gonna work. Okay, so this is the example of the climbing. Let's see this one for an example. Okay, let's discuss this for an example called eight puzzles problem. Okay, so what's the eight puzzle problem? You are given this 9 cross 3 cross 3 square, जिसमें there are 9 cells, एंड हर सेल में एक वो है नंबर 1 2 3 4 8 7 6 5. So let's suppose this is your initial state. तो एज यू कैन से इनिशियल स्टेट में जो भी ये नंबर्स है, जैसे 1 then 2 then 3 4, देन ये इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 5 आना चाहिए था, उसकी जगह क्या है 8, एट जैसे यहाँ पे देन 6 should have been there, 7 should have been there, 8 and this should have been blank. So something like this. So what's our goal? Our goal is to order these tiles in such a manner that all these are in increasing order of 3 4 5 6 7 8, and there should be this blank. So this is our goal state, and what we want to do, given from here to here, we want to reach from here to here. How can we do this? So let's use our hill climbing algorithm. So if we want to use hill climbing, what's the one thing that we are gonna need? We already have the initial state. The initial state हमें बताइए. We need to generate successors. Generate successors के लिए कि क्या कैसे successors generate कर सकते हैं? Using the actions like down, up, left and right. उनसे जो successors generate होंगे, and we need an evaluation function or objective function. So what objective function we decide? So let's decide कि यहाँ पे objective function is the Manhattan distance. So we'll use the objective function as a sum of Manhattan distance sum of Manhattan distance for all misplaced tiles to their correct position. What do you mean by that? कि जो भी टाइल्स मिसप्लेस्ड है वो करंट पोजीशन से कितनी दूर पे, उनकी करेक्ट पोजीशन से कितनी दूर पे, और करेक्ट पोजीशन किसके डिफाइन होगी? विद रिस्पेक्ट टू गोल स्टेट. तो करेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गोल
गोल स्टेट। तो हर मिसप्लेस्ड टाइल्स करंट स्टेट अपनी करंट पोजीशन में है, जहाँ पे भी है वो अपनी करेक्ट पोजीशन जो कि गोल स्टेट में डिपेंड है उससे कितना दूर है, वो मेन अटेंशन डिस्टेंस का सम हमें निकालना है। तो दैट विल बी यूज्ड एज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। So let's compute the objective function for this h of initial state. So let's call it x0. So what is h of x0? तो यहाँ पे कौन कौन सी टाइल्स मिसप्लेस्ड है पहले देखते हैं। वन मिसप्लेस्ड है, नहीं, वन तो उसकी करेक्ट पोजीशन पे। टू है क्या, टू भी उसकी करेक्ट पोजीशन पे। व्हाट अबाउट थ्री, नो, थ्री इज ऑल्सो करेक्ट पोजीशन। फोर, फोर करेक्ट पोजीशन पे। एट, एट इज नॉट इन करेक्ट पोजीशन, एट शुड हैव बीन हियर। तो एट, लेकिन यहाँ पे एट कितनी, एट इज नॉट ऑन करेक्ट पोजीशन, तो एट कितनी दूर है उसकी डिस्टेंस से, एट इज एक डिस्टेंस अवे, राइट। तो वन, राइट, बिकॉज फॉर दिस इज वन मिसप्लेस्ड टाइल। अनदर, उसके बाद कौन से, सेवन, सेवन करेक्ट पोजीशन पे क्या, सेवन करेक्ट पोजीशन पे, नॉन नीड टू वरी। सिक्स करेक्ट पोजीशन पे क्या, नहीं, सिक्स करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, सिक्स शुड हैव बीन हियर। कितनी दूर है वो अपने से, एक, दो, टू स्टेप्स की दूरी पे। टू और सिक्स, व्हाट अबाउट फाइव, फाइव करेक्ट पोजीशन पे, नहीं, फाइव इज है। तो हाउ मच फार अवे फाइव इज, वन, टू, टू पोजीशंस पे। तो टू, व्हाट इज दिस वैल्यू, फाइव। तो एच ऑफ एक्स जीरो, एच ऑफ इनिशियल स्टेट और एक्स जीरो इज फाइव। गुड, नाउ लेट्स जनरेट ऑल दी सक्सेसर्स ऑफ इट। तो we we knew what our initial state. I can just draw it here. So our initial state was 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5. Right? That's it. And goal state we already know. So what are the different successors of this? तो सक्सेसर क्या क्या बन सकते हैं, आप 8 को यहाँ पे मूव कर सकते हो, 3 को यहाँ पे मूव करोगे तो एक सक्सेसर बन सकता है, और 5 को यहाँ पे मूव करोगे तो एक सक्सेसर बन सकता है। तो यहाँ पे 3 एक्शंस पॉसिबल, राइट। तो लेट्स क्रिएट ऑल these successors. Successor 1, successor 2, and successor 1. तो लेट्स सपोज कि ये डाउन की वजह से आ रहा है, अगर मैं 3 को डाउन मूव करता हूँ तो उसकी वजह से जो सक्सेसर आया दैट इज दिस 1, 2, 4, 8, 3 मूव हो गया, 7, 6, 5, राइट। तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हुआ था, 3 का यहाँ पे मूवमेंट हुआ था। राइट, अगर आप मूव करते हो तो क्या सक्सेसर आएगा, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5। यहाँ पे क्या होता है, 8 went here and first of all third successor up, up में जाना 1, 2, 3, 4, 8, 5, 4, 6। यहाँ पे क्या, this moved here, right? So let's calculate the heuristic values for this. So this was my x0 and इसके लिए h of x0 क्या था, was 5।
This is my x1, this is x2 and this is x3। लेट्स सपोज कि तीन सक्सेसर थे, राइट। तो अभी करंट स्टेट क्या है? करंट right now current state is x0। so let's compute these successors for this h of x1। h of x1 क्या आएगा कि कितने टाइल्स अपनी गोल पोजीशन से कितनी दूर पे, राइट। what was our goal position? let's copy it here। okay, 1 2 3, what's that? okay, let me just erase it and redraw it। the goal state was 1 2 3 4 5 6 7 8 and yeah, this was our goal। so let's compute these successors for this। फिर compute these objective values for these and we'll discuss how this works। ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या आ रहा है, ये कितने टाइल्स मिसप्लेस्ड है। तो यहाँ पे 3 1 प्लेस्ड है सही जगह पे, 1 सही जगह पे, 2 2 भी सही जगह पे, यहाँ पे कोई टाइल नहीं, 4 4 अपनी सही जगह पे, 8 8 अपनी सही जगह पे नहीं है। 8 कितनी दूर पे, 1 पे। तो 8 इज नॉट ऑन राइट करेक्ट पोजीशन, तो 1 प्लस 3 सही जगह पे है क्या, नहीं 3 सही जगह पे नहीं है, राइट। तो 3 is one position away from its correct position, तो 1 7 सही जगह पे, गुड। 6 सही जगह पे, no 6 is 2 places away, so 2 plus 5 is also 2 places away, right। 5 यहाँ पे आना चाहिए था, तो 5 is also 2 places away। तो क्या वैल्यू आ रही है इसके लिए, 6। तो इसके लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 6। व्हाट अबाउट h of x2? इसमें 1 करेक्ट पोजीशन पे, 2 करेक्ट पोजीशन पे, 3 करेक्ट पोजीशन पे, 4 करेक्ट पोजीशन पे, 8 8 करेक्ट पोजीशन पे है क्या, 8 नहीं है। 8 कितनी दूर है, 2 जगह। तो 2 और 8 7 करेक्ट पोजीशन पे, 6 करेक्ट पोजीशन पे है क्या, नहीं। 6 इज 2 फर्दर अवे, तो 2 further away and 5 is also 2 further away, which is 6। and h of x3, इसके लिए क्या वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट पोजीशन पे, 8 करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, 8 इज 1 अवे, तो 8 के लिए 1 प्लस 5 करेक्ट पोजीशन पे है क्या, 5 नहीं करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, 5 इज ऑल्सो 1 अवे, राइट। 5 यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे 1 अवे, प्लस 7 करेक्ट पोजीशन पे, 1 6 इज 2 अवे, तो विच इज 4। तो अब कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा गोल क्या है, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस डिस्टर्बेंस, राइट। बिकॉज अगर आप गोल के लिए कैलकुलेट करोगे एच ऑफ गोल, इट विल बी 0 बिकॉज everyone is there on correct position, so this will be 0। तो we are trying to minimize this। तो now कौन सा बेटर है इनमें से, x3 of course, because x1 and x2
के लिए एच ऑफ एक्स है जो उससे बड़ा है, एक्स जीरो से बड़ा है, तो विल नॉट इवन सेलेक्ट दोज, विल नॉट इवन कंसिडर दैट, the only option we have is x3, so will our current state will become our current state will become x3, and now what, we'll simply explore this one, right? So let me just clear it here. H of x3 was 4, तो अब क्या होगा, अगेन विल सिंपली जनरेट द सक्सेसर्स, इसके सक्सेसर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो भी सक्सेसर्स हम बना सकते हैं, लेट्स क्रिएट दोस। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल मूव है यहाँ पे, दिस मूव राइट और डाउन, बट अगर डाउन जाते हैं हम तो विल सी दैट कि इस अगर ये मूव हम लेते हैं तो हम इसी पे पहुंच जाएंगे वापस, एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड मूव। तो लेट्स क्रिएट दो सक्सेसर्स, 1 2 3, तो लेट्स राइट टू वाला करते हैं, 4 8 5 7 6, okay, and another this 1 2 3 4 8, so this is down 7 6 5. Now you must be thinking कि why did we draw this, ये तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, तो ये फिर से हम क्यों ड्रॉ करें। रिमेंबर दिस कि यहाँ पे हम कोई भी एक्सप्लोर्ड सेट या कोई भी विजिट फ्रंटियर मेंटेन नहीं कर रहे, तो वी डोंट इवन नो, आवर एल्गोरिथम वांट टू बी एबल टू रिमेंबर दिस कि ये स्टेट ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुकी है, और एल्गोरिथम को किस कौन सा पता है, सिर्फ इस स्टेट के बारे में, करंट स्टेट के बारे में पता है, नथिंग एल्स। तो again there is a high chances of our algorithm going to this position also. So let's calculate this. So let's suppose कि this is successor 1 and 2, so let's call it x31 and x32 yes. तो h of x31 क्या आ रहा है, h of x31 कितनी टाइल्स अपनी सही पोजीशन से दूर है, ये सही पे, ये सही पे, ये सही पे, ये सही पे, 8 अपनी उससे एक दूर पे, तो 1 प्लस 5 अपनी उससे एक दूर पे 1, तो and 6 is also from one distance away, तो 7 अपने करेक्ट पोजीशन पे 0, तो only thing that is remaining is 6, this is 1, so that is 3, and इसके लिए कितना आ रहा है, h of x 32 के लिए, 32 के लिए that we already know, ये सेम स्टेट है तो 5, तो कौन सा चूज होगा, this one, right, because यहाँ पे कितना था 4 and यहाँ पे 3, so we found a better one, and यहाँ पे 5 which is worse, so we'll pick this path, and now current state will become x31, okay. Now what, generate the successors of this, so let's generate successors of this, इसके क्या क्या सक्सेसर्स बन सकते हैं, इसके दो, यहाँ पे भी कौन कौन सी मूव्स पॉसिबल है, दिस वन एंड दिस वन, तीन मूव्स पॉसिबल है, एंड वी नो दैट, तो तो लेट्स गो फॉर द डाउन वन, तो 1 2 3 4 5 7 8 6, तो दिस मूव वाज कि यहाँ से डाउन मूव हुआ, राइट।
and another move was go right. तो राइट वाला क्या था कि तो 1 2 3 4 8 5 and 7 6. So this was the one move, and third move is go left. Okay, 1 2 3 4 8 5 7 6. This was the next one, and we know that ये already हम explore कर चुके हैं this was. तो अगर मैं इनके लिए कैलकुलेट करूँ this, let's call it x311, x312, x313. इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करूँ x311 के लिए. So what will be the value of this? This is on correct position, this is on correct position, this on correct position, this on correct position. This is one farther away. So for 1 plus this is on correct position, this is on correct position, and this is on one farther away. So 2 only. इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए अगर कैलकुलेट करें तो correct position, correct position, correct position, correct position, one farther away. तो h of x312 will be 1 plus, और कौन कौन से 5 is farther away 1, right? 7 is one farther away, and 6 is one farther away, which is 4. and इसके लिए क्या आ रहा है? इसके लिए भी this was the same, so 4. So these two are cancelled because यहाँ पे इसके लिए वैल्यू कितना था 3 और इनके लिए वैल्यू कितना आ रहा 4. तो will not consider those, we'll consider only one. And let's consider this one itself. So now this will become, current state will become as 311. And now what? Generate all the successors of this, right? तो इसका क्या क्या successors possible है? इसके जो successors possible है that is 5 को यहाँ पे ले जाना, एक मूव ये पॉसिबल है, और एक 8 को ऊपर ले जाना. तो आई विल नॉट ड्रॉ दिस 8 को ऊपर ले जाने वाला. यू कैन ड्रॉ दिस वन जो 8 को ऊपर ले जाने वाला है, दैट यू कैन डू बिकॉज सेम ही है, यहाँ पे ही रहेगा. तो राइट, दिस स्टेट विल बिकम, it will go to this state only, right? So let's not waste our time on that, drawing that one. So let's draw this. 1 2 3 4. तो this is left. ये 5 अगर यहाँ पे जा रहा है 5 7 8 6, तो क्या मूव था यहाँ पे this one. And इसमें if I do draw it 1 2 3 4 8 5 7 6 8. this was up. तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ for this one x3111, h of x3111 is कितना आ रहा है इसके लिए? ये सारे करेक्ट पोजीशन पे, सिर्फ ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं, तो 1. इसके लिए सिंस ये तो ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पे 3 x3111 312 h of x3112 is 3. So we'll not choose this one, we'll go with this, and let's
इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? दो पॉसिबिलिटीज है, दिस वन एंड दिस वन, तो लेट्स कंसिडर दोज. तो अब में 1 2 3 4 5 6 7 8 and the other one is right 1 2 3 4 5 7 8 6. ठीक. And if you realize this key, now this h of x 3 1 1 1 1 h of x 3 0. So this is the goal state, right? So we have found our solution. तो अगर कोई path भी पूछे तो you can have this sequence of x's. तो path क्या था आपका? First you took up, then you took right, then down, then left, then up. And this is how you reach the solution. Okay? And you realize कि your hill climbing just took few steps only. कितने steps लिए इसको solve करने में? एक, दो, sorry. How many steps did it take? Step 1. This is step 2. This is step 3. This is step 4. And this is step 5. So found solution in 5 steps only. Compared to, so this is a constant, right? Compared to your BFS, DFS, which takes the branching factor वगैरह से, it would have taken much more steps to find the solution, and we have found the solution using hill climbing in 5 steps only. So they are computationally efficient. So your hill climbing research algorithm is very efficient when in terms of computation. So it is like a almost constant amount of time, almost constant time complexity. So problem size kitna bhi ho, it can find you a solution in a very fast, like really fast, in a very less number of steps. So this was our example of hill climbing search algorithm. But see, this is good because we took an example जहाँ पे ये work कर रहा है. But there are some scenarios where this doesn't work. Our algorithm won't be able to reach the goal. For example, remember when we started from the x, we say कि इसके जो भी successors आए x1, x2 and x3, what if there is this scenario कि x0, मतलब instead of talking about any x0, I can let's talk about any x, any step के लिए, कोई भी intermediate उसके लिए, उसके successors है x1, x2, x3 till xi. Let's suppose कि k successors है x के. तो these k successors, तो कुछ ऐसा सिनारियो हो सकता है कि x is h of x1, h of x2, h of x3, h of x2. So if something like this happens, if h of x is less than h of x1,
एंड एच एक्स के, अगर ये इन सबसे छोटा है एच ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि दिस इज माई बेस्ट स्टेट, इससे बाद में इसके कोई भी सक्सेसर्स नहीं है जो इससे बेटर स्टेट पे। तो एल्गोरिथम क्या करेगी, इट रिटर्न एल्गोरिथम विल रिटर्न एच ऑफ एक्स एज ए सॉल्यूशन इवन दो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। इवन दो एक्स सॉल्यूशन नहीं है, इट algorithm will return x as a solution itself. So this is one limitation of hill climbing. So this was something called local minima. This is known as the local minima. कि तो this might be something like this, right? कि जैसे मान लो अगर मैं के पूरे उसको जैसे एक प्लॉट बनाऊं, यहाँ पे आपकी स्टेट्स है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, तो something like this, for example kind of like this. So right now this is your x, तो h of x क्या है ये, तो you realize कि h of x is smaller and इसके जो भी neighbors है, these are its neighbors, these these are the neighbors of x, and इन सभी neighbors के लिए, तो these are let's suppose कि x1 x2 x के and so, तो these neighbors, तो you realize कि सभी neighbors की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो एल्गोरिथम को लगेगा कि इट हैज रीच्ड द सॉल्यूशन, बट एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, दिस वन, दिस इज द गोल, जहाँ पे दिस इज द मिनिमम वर्जन, इट दिस इज द एज ऑफ गोल, तो इवन दो दैट वाज नॉट अ गोल, आवर एक्स विल बी रिटर्न एज अ solution. So this is one of the limitations of the hill climbing. So this is known as a local minima. Local minima means कि this is the minimum value around this region, and this is known as a global minima. That is, this is the overall global minima or minimum. This is the overall minimum value in for all these states that we are talking about. So similar to local minima, local global minima, there are something called, जैसे यहाँ पे this can be think of as a local maxima also, and if you talk about this, if I extend it further, this can be thought of as a global maxima. Okay, so this is one limitation for climbing कि it gets stuck at local minimum or global maximum, so, or local maximum if you are talking about maximum problem. Okay, so in the next lecture we'll talk about the, I wanted to cover in this lecture only, but since this has quite a long lecture, we'll cover into the next lecture something called variations of hill climbing, which will improve our chances of
key our algorithm doesn't get stuck on the local minima or global minima. So local minima or local maximum. We'll do some variations, some modification into their algorithm so that the chances of getting stuck improves, gets less. Okay, let's stop here and we'll go into the next lecture.